कैरफेस नाम के एक ट्रेडर ने एक स्ट्रेटेजी शेयर किया है जो सिर्फ सिंपल ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजी को शेयर ही नहीं किया है, एक हफ्ते का बैक टेस्टिंग करके भी दिखाया। उन्होंने ये स्ट्रेटेजी से बहुत ही ज्यादा पैसा छाप रहा है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटेजी को देखते हैं। All you need is one strategy to make a consistent living trading. The problem is 90% of traders lose money because they enter randomly on the chart hoping to make money. I made $15,000 in the last 7 days with verified broker proof. And after trading for the last 7 years, the biggest lesson I've learned is simplicity equals profitability. So in this video, I'm going to show you the exact trading strategy I use to make money on a daily basis. And then I will backtest the strategy over a 1-week period to show the wins and losses if you only trade one strategy. Finally, at the end of the video, we'll look at the full stats of the 1-week backtesting session using the strategy so you can see real results. So गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है यार। ये वीडियो को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। So in this video, I'm going to show you one simple strategy that you can trade on a daily basis to make consistent profits. Now, the strategy consists of 3 simple steps. First, I want to give you the full entry model and important steps that you need to understand to make the strategy work. Then we will backtest it over a 1-week period. And finally, at the end of the video, I will show you the real results of the full 1-week backtest on a consistent basis. First, let's go over a couple important factors for this strategy. Number 1, I personally trade options. Therefore, for this strategy, I trade whenever I take a trade 1 week expiry, meaning if it is a Monday, I'm going to be taking the option contracts that expire that Friday, and I take one out of the money. This simply means if the price of the stock is $100, I'm going to be taking the $101 calls, and it is simply going to be one out of the money contracts. That's how I trade. Number 2, this works on stocks, options, futures, crypto, forex, whatever you trade. This setup and strategy will work for your specific instrument class. Me personally, I trade options and futures primarily. However, I've traded crypto before. It does work on crypto, and I know many traders that do trade it on forex as well and stocks, and it works completely fine as well. Number 3, I only trade from 9:30 a.m. Eastern to 11 a.m. Eastern. I trade for around 2 hours a day every single day, and then that's it. I don't look at the market after that, and then I go and enjoy the rest of my day. So guys, अभी सबसे पहले रूल को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन के ऊपर काम करेगा। उसके बाद देखिए, ये जो एक्सपायरी आपको चूज करना है, ऑप्शन का जो एक्सपायरी चूज करना है, वो आने वाले 1 वीक का होगा, ठीक है। अगले जो आने वाला 1 वीक होगा, उस वीक का आपको एक्सपायरी चूज करना है, और यहाँ पर आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 यहाँ पर क्या है, दिस वीक ऑन स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ETC। ये यहाँ पर सभी के ऊपर ये वाला स्ट्रेटेजी काम करेगा, ठीक है। रूल नंबर 3, दिन में बस आपको एक ही ट्रेड करना है, वो भी 9:30 AM से 11 AM के बीच में। उनका जो ये टाइमिंग है, उनका यूएस मार्केट के हिसाब से टाइमिंग है, लेकिन आप क्रिप्टो मार्केट या फिर आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से आपका टाइमिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन वो टाइमिंग कैसे सेट करना है वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग वीडियो की स्ट्रेटेजी समझने वाले हो, तो स्ट्रेटेजी के ऊपर आगे चलते हैं। With those important facts out of the way, let's talk about these steps. First thing you're going to do is mark out the first 5-minute opening range of the day. This means from 9:30 a.m., this would be the 9:30 a.m. candle, to 9:35. You're going to mark out the first 5-minute opening range. This is Eastern time, of course, so the New York Stock Exchange open. 9:30 a.m. to 9:35 a.m. Eastern, you're going to mark out the high and low of this range. Step 2, all we're waiting for is the breakout above this range and the retest. I'm a break and retest trader, and therefore we're not buying the breakout, but we're buying the retest. उनका जो न्यूयॉर्क का टाइम के हिसाब से यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 9:30 AM तक, ठीक है। 9:30 AM में आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर देखना है, मतलब आपको 1 मिनट का कैंडल देखना है और 5 मिनट वेट करना है। टोटल 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस 5 कैंडल यहाँ पर 1 मिनट का देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर। उसका हाई और उसका लो यहाँ पर मार्क कर लेना
है। ओके, Now we'll talk a little bit more about why I don't trade just the breakout when we actually get into the examples in the back testing. However, all we're waiting for is the breakout and the retest to either side, either to the upside or to the downside. Now, तो यहाँ पर आपको देखना है आपको ब्रेकआउट पर यहाँ पर अप साइड में ब्रेकआउट आ रहा है या फिर जो यहाँ पर आप लोग नीचे की साइड मार्क किया है उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा है। ठीक है, for step number 3, we can see here we got the breakout. Once we get the breakout, in this example, we got it below the 5-minute range low. We now want the retest with weak price action. Weak price action simply indicates that sellers are stepping into this stock right as it comes back into the 5-minute range low. If you don't know how to read price action, I have a full in-depth guide in the link in the description with the full playlist on exactly how to start trading with all different modules for absolutely free on YouTube. But स्टॉप 3 आपको क्या देखना है? स्टॉप 3 आपको यहाँ पर देखना है मार्केट में जो कैंडल यहाँ पर बन रहा है ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है तो उसका यहाँ पर रिटेस्ट आ रहा है या फिर नहीं। अगर रिटेस्ट आता है तो ही आपको यहाँ पर उस स्टॉक के साथ ट्रेड करना है या फिर उस ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, you want weak price action, and for the strategy and the backtesting, we're going to put our stop loss at the break of the impulsive candle that will be breaking the 5-minute range high or low. So in this example, we can see this candle is the one that broke below the 5-minute range low, and therefore our stop loss is simply going to be a break above that key level. And once again, we're going to be targeting at least low of day or at least a 2R multiple, meaning for every $100 of risk, we want to make $200. In this example here, we had a 3.05R multiple, and that's because we were targeting low of day. And this means for every $100 of risk, we were going to make $305. And finally, when we look at the actual results of this trade, we can see we came back, we retested, we entered in here, and we targeted low of day. And this trade worked out extremely well in simply just 2 minutes. With a 3.05 risk to reward, this means if we risked $985 on this trade, we would have made $3,000 in 2 minutes by simply trading the 5-minute opening range retest. Now, तो यहाँ पर उन्होंने बताया आपके यहाँ पर जो आप लोगों ने ट्रेड अभी लेना है उसका 3:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड लेना है। जो आपका रिस्क रहेगा उसके हिसाब से आपको 3:1 के हिसाब से रिवॉर्ड भी लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिटेल में फिर से बात करने वाले हैं। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे दिन। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अभी चलिए हम लोग सारे रूल और स्ट्रेटेजी को स्टेप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है और ऑप्शन में कैसे आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो आपको 1 वीक एक्सपायरी मतलब अभी जो एक्सपायरी चल रहा है अगर एक्सपायरी एकदम रिसेंट में है तो उसका अगले वीक का एक्सपायरी आपको चूज करना है और आउट ऑफ द मनी यहाँ पर आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। ठीक है, और अभी चलिए देखिए यहाँ पर तो रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 यहाँ पर क्रिप्टो में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन फ्यूचर स्टॉक के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, इंडियन मार्केट के में अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, आपको दिन में बस एक ही ट्रेड करना है और कब करना है 9:30 AM उनके हिसाब से 9:30 AM उनके जो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम है उनके हिसाब से 9:30 में उनका स्टॉक मार्केट यहाँ पर ओपनिंग होता है और उसके बाद 9:30 से लेकर जस्ट 11 AM तक ही आपको ट्रेड करना है। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके बीच में अगर ट्रेड मिलता है तो ये आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर दिन में बस एक ही ट्रेड करना है, याद में रखना। और स्टेप अभी चलिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी को समझते हैं। स्ट्रेटेजी आपको जस्ट ये जो चार्ट है 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, जस्ट आपको 5 मिनट 5 कैंडल यहाँ पर वेट करना है, 5 कैंडल यहाँ पर वेट करना है। 5 कैंडल हो जाता है बस, मतलब इसका 5 मिनट कैंडल का हाई और लो यहाँ पर आपको मिल चुका है। ठीक है, जैसे ही 5 मिनट कैंडल का हाई और लो आपको यहाँ पर मार्क करने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अब लोग हाई और लो को मार्क कर लो। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, आपको अभी वेट करना है मार्केट इसको अप साइड में या फिर डाउन साइड में ब्रेक करे। ठीक है, तो स्टेप 2 आपको कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको बस वेट करना है मार्केट अप साइड में इसको ब्रेक करे या फिर डाउन साइड में ब्रेक करे। तो अभी अगर देखने को मिलता है हाई और लो के बीच में अगर लो को ब्रेक करता है तो आपको अभी स्टेप 3 में आपको वेट करना है इसको एक बार रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आए। ठीक है, जैसे ही जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है जो यहाँ पर लो था, इस लो के अंदर आपको देखो यहाँ पर एक रीटेस्ट कैंडल देखने
देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस तरह का रिटेस्ट कैंडल आपको देखने को मिलेगा तो आपको एंट्री के बारे में अभी सोचना है, यहाँ पर एंट्री के लिए सोचना है। और आपको अभी स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, ये जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल का लो आपको ब्रेक, यहाँ पर स्टॉप लॉस होने वाला है, इस कैंडल का लो, ठीक है, क्लियर। और टारगेट आपको क्या होगा, जो स्टॉप लॉस होगा, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको 3:1 रिस्क कैंडिडेट रखना ही पड़ेगा। ओके, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आपको सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 5 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करना पड़ेगा। 5 मिनट, ये सारी कैंडल 1 मिनट का है, तो पांचों कैंडल मिला के 5 मिनट कैंडल का हाई और लो यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो 5 मिनट कैंडल का लो यहाँ पर और हाई को मार्क करना पड़ेगा। स्टेप 2 आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर लो ब्रेक होता है। अगर मार्केट यहाँ पर लो साइड ब्रेक होता है या फिर हाई साइड ब्रेक होता है, उसके बाद आपको वेट करना है यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए। रिटेस्ट आए एक बार, जब भी रिटेस्ट आएगा मार्केट में तो रिटेस्ट के साथ साथ आपको बस एंट्री करना है। जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रिटेस्ट आ रहा है तो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बाकी है, मतलब सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको इस जगह पर बिल्कुल एक एंट्री बना लेना है। और जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, जो कैंडल 5 मिनट का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल का हाई या फिर लो यहाँ पर आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको 3:1 के हिसाब से रखना है, बस स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। अभी हम लोग यहाँ पर बैक टेस्टिंग रिजल्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग में क्या हो रहा है, उनका कितना प्रॉफिट हुआ है और हम लोग इंडियन मार्केट में क्या प्रॉफिट कर सकते हैं या फिर नहीं। In the video, I'll show you the final results in terms of the wins and losses for the full week. Okay, so here we are on the very first day. We're on the 1 minute time frame, and the first thing we have to do is mark out the high of the first 5 minutes and mark out the low of the first 5 minutes. तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पर हाई और लो को मार्क कर लिया है, ठीक है। तो चलिए, here we can see this is going to be the first 5 minute high and this is going to be the first 5 minute low. Now, all we're simply waiting for is the stock to either break above the 5 minute high or the 5 minute low, come back for the retest, make strong price action, and then we're looking for continuation in the trend. Now, that may be to the upside or it may be to the downside. However, what we need to do is first wait for the breakout. This will signify that buyers or sellers are stepping in, and that confirms the actual trend. And then we wait for the retest, as that's going to be the lowest risk entry for us. So जैसे ही आपको यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो ब्रेक होता है, आपको बस वेट करना है। यहाँ पर पेशेंस के साथ आपको बस एक बार रिटेस्ट आना चाहिए। ये आपको स्ट्रैटेजी, जैसे ही रिटेस्ट आएगा आपका सेटअप कंप्लीट होने वाला है और पैसे उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री के बारे में सोचना है। ओके, and see exactly what happens. So far here we just got the breakout. Now what we're waiting for is the retest. So as we can see, we had a really nice push to the downside. We got a little bit of displacement and now we're coming in for the retest. We can see when we're coming in for this 5 minute range low retest, we have weak price action, meaning when the stock came up to this level, buyers try to bring it back above, and that's exactly what this upper wick or this upper line represents. However, they were not able to, and this stock is now going to continue downwards because sellers were able to close the candlestick below the key level. If you don't understand how to read candlesticks and तो यहाँ पर रिटेस्ट आ चुका है, ब्रेकआउट यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद रिटेस्ट भी आ चुका है, तो इस जगह पर आपको एंट्री के बारे में अभी सोचना है, ठीक है। price action, I have आपको a स्टॉप full लॉस in-depth कैसे रखना guide on है, exactly तो how चलिए to देखते start हैं। day trading once you learn this strategy. So you can watch that playlist with all those different topics after you're done watching this video. But this is a good entry for us for that retest to the downside. Now we're going to be looking to enter into a short position. Like I said, our stop loss is always going to be, to keep it very simple for this video, the impulsive candle that breaks below or above the 5 minute range. In this example, this would be very tight right above the 5 minute range low, and we need at least a 2R multiple. In this example, that 2R multiple comes simply at low of day. Now you can see this trade is a little bit more tight in terms of risk. However, because I am trying to make this strategy as simple as possible for you to understand, we will continue to use the exact same rules for every single trade. Now, let's enter into a short position here and let's see exactly what happens. ठीक है, and just like that we can see in 1 2 3 सो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा। सो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर समझो, मार्केट में जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल आया, रिटेस्ट कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। जो अब भी कैंडल बन रहा है, जो कैंडल रिटेस्ट में जा रहा है, मतलब रिटेस्ट दे रहा है, उसका कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देगा वैसे ही आपको एंट्री ले लेना है और स्टॉप लॉस रख देना है। जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, तो उस कैंडल का लो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको 3:1 के हिसाब
हिसाब से रिस्क कंट्रीर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर रिटेस्ट के साथ यहाँ पर एंट्री बनाते हो तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। Simply entering in off of the retest of the 5-minute range low, and we would have been done the day by 9:50. Enjoy the rest of this was to see if this strategy is really profitable. But with this being said, let's open up this day and play out the first 5 minutes. Here is the first 5-minute range. All we're going to do is mark out the 5-minute low, and we're going to mark out the 5-minute high. Now, once we've done this, like I said, all we're waiting for is simply the break and retest. तो देखो यहाँ पर फिर से एक बार 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो मार्क कर लिया है, और जैसे ही मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर बस वेट करना है इसका हाई और लो ब्रेक हो। It really is that simple. You only need these 2 key levels, and you don't want to trade anything in between this range. Like we can see here, so far we are currently just in range, and this is exactly why this strategy works so well. It helps you avoid the first 5-minute opening range, and therefore you won't take low quality setups, because if we break below the 5-minute range or above the 5-minute range, that means buyers or sellers are stepping up and they're being more aggressive. But in between here, they believe it's a fair price for the stock, and therefore it's just going to consolidate. And if you take an entry in between this range, this is really those low quality trades. So for us, we completely filter out the low quality trades by simply waiting for the breakout and the retest. तो आपको यहाँ पर बेस के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और ये आपको क्या करना है, यहाँ पर लो क्वालिटी सेटअप पर भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही आपको दिखाई देता है कोई भी ब्रेकआउट कैंडल आया है लेकिन उसका ब्रेकआउट बहुत ही ज्यादा घटिया है, घटिया मतलब क्या है, ब्रेकआउट एकदम ना के बराबर ऊपर की तरफ बिग ज्यादा आ रहा है, या फिर कुछ भी सेटअप आपको मालूम ही है किस तरह से आपको कैंडल को देखना है। अगर नहीं मालूम है कैंडल, तो कैंडल के वीडियो मेरे यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कैंडल कौन सी कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए, कौन सी कैंडल पे नहीं, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, आपको एक परफेक्ट सेटअप, जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है उसके बाद आपको वेट करना है, अब एक रिटेस्ट चाहिए। जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट आया, रिटेस्ट कैंडल क्लोजिंग होते ही आपको ट्रेड लेना है, बिल्कुल। In this example here, what just happened? We broke out on the 5-minute range low, and now we came back to retest the 5-minute range low with weak price action. Therefore, we can now look to once again go short on this name, and our stop loss is once again the break of the impulsive candle that broke the 5-minute range low, and we're looking to have at least a 2R multiple. In this example, that 2R multiple comes near that 515.75 level. However, if you've watched my videos before, you know I target whole psychological numbers. Here is an example where we can target that whole psychological number of 515. This is because this is where big institution buyers and sellers put their orders when they're either buying or selling the stock. If you want to get a little bit more information on that, it is going to be in the playlist down below for free, like I said. However, let's enter into a short position here once again and see exactly what happens. And just like that, we can see we just hit our profit. इनका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो था, स्टॉप लॉस लगाया किस तरह से आप लोगों ने देखा, और जो टारगेट यहाँ पर कितना अच्छा उनका एक्यूरेसी है। ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही ज्यादा औसम के तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, और अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा, और मैं खुद भी काम करने वाला हूँ आगे जाकर। तो ये वीडियो आप लोग को उनका इस चैनल पे जाकर स्कारफेस ट्रेडर के ऊपर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। बाकी आप लोग इसके ऊपर अगर और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं खुद इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने वाला हूं, और मैं इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट किस तरह से रहता है मैं आपको बाद में यहाँ पर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं तो फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले एक वीडियो में अगले एक स्ट्रेटेजी लेकर।